Good morning, students. Hope you all are doing well. Today we will continue with chapter 14 Adjectives, Degrees of Comparison. This video is part 2. So now let's begin our class. In this chapter we have learned about adjectives. Adjectives are the words which modify or describes a noun or pronoun, and degrees of comparison means it refers to adjectives written in different forms to compare one, two or more nouns with each other, or you can say that degree of comparison means a level of comparison of adjectives between two or more objects or two or more people or two or more places. So the first degree is positive. In positive degree, we do not make any comparison. No comparison is made in this degree and it is the absolute degree. पॉजिटिव डिग्री में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं एंड ये एक एब्सोल्यूट डिग्री होती है. इसमें जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं वो अपनी बेसिक फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है एंड पॉजिटिव डिग्री में हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं. इन कंपैरेटिव वी यूज़ टू कंपेयर बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स. जो टू सिमिलर थिंग्स हो उनमें हम कंपेयर करते हैं. एंड इन superlative is the highest degree of comparison. In this we used to compare between two or more similar things. Okay, so now moving to our today's topic, that is wrong uses of double comparatives and superlative. The most common mistakes done by students while using degrees of comparison is using double comparatives and superlative. One must be careful not to use it. That means आप लोग बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स करते हो जब आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हो या सुपरलेटिव में चेंज करते हो. सो आप डबल एंट्री करते हो, दो बार यूसेस करते हो कंपैरेटिव का. दैट मीन्स जब आपको पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बनाना होता है देन वी यूज टू ऐड आर or sometimes we used to add er and sometimes we used to add more. सो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम या फिर आर ऐड करते हैं या ई आर ऐड करते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस हम ई आर ऐड करते हैं एंड मोर ऐड करते हैं. सो जब हम दो बार ये चीज़ें कर देंगे, जब हमें कंपैरेटिव बनाना है सेंटेंस में, कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं एंड उन केसेस में आप दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ कर लोगे, सो वो आपकी गलत एंट्री हो जाएगी. सो आप ये कैसे इसको अवॉइड करें कि ये आप गलती ना करें. सो नाउ लेट्स सी. The error with double comparatives is the uses of both the er ending and the word more. So ज़्यादा मिस्टेक कब होती है जब आप कंपैरेटिव er जब चेंज करते हो, एडजेक्टिव को जब कंपैरेटिव में बनाते हो er ऐड करके एंड मोर ऐड करके. सो उन केसेस में आप ज़्यादा गलतियाँ करते हो. These sentences generally sound awkward when read aloud. That means जब आप ये ऐसे sentences बनाओगे एंड जब आप उनको pronounce करोगे, उन्हें बोलोगे, then बहुत awkward sound करेगा. Now let's see the example. Vanya is more richer than Rekha. So this sentence is wrong because आपने जो sentence यूज़ किया है इसमें जो comparative form यूज़ किया, आपने more भी यूज़ किया है एंड richer er भी है, बट आपने ये बहुत गलत तरीके से यूज़ किया है. यहाँ पे मोर नहीं होना चाहिए. बस यहाँ पे जब कंपैरेटिव आप बनाते हो देन आपका सब्जेक्ट हो गया एंड वीना इज़ रिचर देन रेखा. सो दिस इज़ करेक्ट. जब हम कंपैरेटिव में बनाते हैं सो फर्स्ट आपका एडजेक्टिव हो गया एंड एडजेक्टिव के बाद देन आता है. हमेशा आपको ये याद रखना है जब आप कंपैरेटिव फॉर्म में बना रहे हो सो देन हमेशा आपका एडजेक्टिव के बाद आएगा. In case of comparative, because you are comparing Vanya and Rekha, आप यहाँ compare कर रहे हो दो similar चीज़ों से. Now, the comparative degree of rich is richer. So, जो rich है ये आपका positive form है and richer आपका comparative form है and इसका superlative richest होगा by adding est. Now, let's see the next point. Similarly, the error with superlative comparative is the uses of both the est ending and the word most.
दैट मीन्स इन केस ऑफ सुपरलेटिव जब आप सुपरलेटिव फॉर्म में बनाते हो देन आप 2 बार एंट्रीज करते हो, 2 बार यूज़ करते हो EST एंड मोस्ट। EST हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करेंगे या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, देन वी यूज टू ऐड EST हम ऐड करते हैं, कभी ST ऐड करते हैं एंड मोस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे जब आप EST यूज़ करोगे एडजेक्टिव के साथ उनको सुपरलेटिव बनाने के लिए एंड मोस्ट यूज़ करोगे, सो आप जब 2 बार ये चीज़ें यूज़ करते हो सो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। जस्टिन इज़ द मोस्ट fastest runner in our school. So this is wrong. The sentence is wrong because यहाँ पे आपने most यूज़ किया, most यहाँ पे नहीं होना चाहिए. So the correct way to write the above sentence is Justin is the fastest runner in our school. एंड यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने द पहले ऐड किया है, जो हमारा एडजेक्टिव है फास्टेस्ट उसके पहले द है। सो इन केस ऑफ सुपरलेटिव में जब आप चेंज करते हो सेंटेंस को, सो द हमेशा जो आपका आर्टिकल है द वो आपके एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए। एंड कंपैरेटिव में जब आप बनाते हो, कंपेयर करते हो दो सिमिलर चीज़ों को, सो जो भी आपका एडजेक्टिव होगा उसके बाद देन आना चाहिए। So this point you have to remember where to use then and where to use the. Now let's see the next point, changing the sentence from one degree of comparison to another. So here you will learn how to change the sentences from one degree to another degree. So the first point is from positive to comparative and vice versa. That means यहाँ आप positive से comparative बनाएंगे and then comparative to positive. So now let's see, when a thing or person is to be compared with another of the same kind, we can write it in positive degree of comparison. So examples are, Shine is not so stupid as her brother. Priya is as clever as Rosie. Rajni is at least as tall as Jane. So now let's see when we can write the same sentences in comparative degree. So आपने positive देखा, now you will see how to write in comparative degree. So in comparative degree, first sentence was Shine is not so stupid as her brother. So in case of comparative you will write like this, Shinu's brother is more stupid than her. Now see the second point, Priya is as clever as Rosie. In case of comparative, Rosie is not cleverer than Priya. Rajni is at least as tall as Jane. Jane is not taller than Rajni. So like this you will do the changes. Now the second point is comparative to positive degree of comparison. That means the sentences are given in comparative, you have to change to positive degree. So the first sentence is Keshav is more handsome than Vasu. This is comparative, so you will change to positive. Vasu is not as handsome as Keshav. So this is your positive. Now see the next point, platinum is costlier than gold. Comparative, gold is not as costly as platinum. Positive. Okay, so now you are adding not. Okay, here now the next point is the Ramayana is not bigger than Mahabharata. Comparative form, the Mahabharata is not so big as the Ramayana. So this is your positive sentence, positive degree. Now the next point, that is from superlative to comparative and positive. That means here the sentences are given in superlative, you have to change to comparative and then positive. So A is superlative, Mumbai
is the biggest city in India. So you are comparing Mumbai with all the cities in India कि मुंबई क्या है, मुंबई सबसे बड़ी सिटी है इंडिया में. सो यू हैव इंक्लूडेड ऑल द सिटीज़, जो जितनी भी सिटीज़ हैं इंडिया में आप सारी सिटीज़ से कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज सुपरलेटिव आपकी एक हाईएस्ट डिग्री होती है कंपैरिजन में. So now see the next point. In case of comparative, in comparative you will compare Mumbai with one city. आप comparative में हमेशा दो चीज़ों से कंपेयर करते हो, दो सिमिलर चीज़ों से कंपेयर करते हो. Now see the sentence. Mumbai is bigger than any other city in India. So you will write like this. First you will write Mumbai is bigger than any other city in India. In case of positive, you will write like this. No other city in India is as big as Mumbai. पॉजिटिव में आप कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हो. पॉजिटिव में सिंपली आप बता रहे हो कि मुंबई बिग है, मीन्स बिग सिटी है इंडिया में. Now see the next point. In case of superlative, London is one of the biggest city in England. In comparative, London is bigger than most other cities in England. In positive, very few cities are as big as London. Now, see the C point. In case of superlative, Mount Everest is the highest of all peaks. In case of comparative, Mount Everest is higher than all other peaks. Positive, no other peak is so high as Mount Everest. Now, D point, using least. So, how to use least? Superlative. Brian is not the most dangerous criminal in our country. In case of comparative, some criminals in our country are not more dangerous than Brian's. Now, in case of positive, some criminals in our country are at least as. So now you have used here at least as dangerous as Brian. So now I hope these points are clear. When you will do practice, then it will be easily how to make sentences related to positive, comparative and superlative degree. So now students, we have completed this chapter. If you have any doubts, you can ask me in a comment section below the video, and don't forget to write your name, class, which section for your attendance. Once you will do the exercises based on chapter 14, you will learn how to change the sentences from superlative to comparative and then positive. It's very easy. जब आप इनसे करेंगे एक्सरसाइज, आप प्रैक्टिस करेंगे, then easily आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है. So now your homework for today is to read this chapter and do exercise 2 and 3 from chapter 14. Now thank you students. Have a nice day.